ഇതൊരു ഔഷധിയാണ്. ഇതിൽ മാസം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ചേർന്ന ഈ യൂണിറ്റിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം ജലദോഷം അടക്കം വന്നിട്ടില്ല. In India, they have more than 6,000 crop plants. Most of them grow wild and are used medicinally. ഹെർബുകളെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുക മരുന്നുകൾ എന്നാണ് പറയുക, മെഡിസിൻ എന്നാണ് പറയുക, മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. More than 1,000 different medicinal herbs are used commercially. Demand is rising, not only for medicines, but also in the cosmetics industry. दवाई करके लोग बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, दुआरी लग नहीं रही, वो बीज इसका ख़त्म हो रहा है, तब जाके जड़ी बूटी कम हो गई. In the swampy meadows of tropical Kerala thrives Brahmi, water hyssop. The inconspicuous herb is said to improve the faculties of thought and memory. In India, gathering herbs is a way for many farmers to gain a bit of extra income. Reports that Brahmi might be effective against Alzheimer's disease has lifted demand. This prompted Karan's family to start growing Brahmi as well. Karan sells his Brahmi harvest to a small factory. From the mountains in the heart of Kerala come a variety of plants that many Indians consider essential to everyday health. The boss receives herb deliveries personally. In his artisanal production, Abdul Jabbar Gurakal processes more than 500 medicinal herbs into Ayurvedic medicines. Ayurveda means the science of life. It was long forbidden under British colonial rule. Yet some small producers preserved their old recipes. ഏകദേശം 300ഓളം മരുന്നുകൾ ഞങ്ങൾ ഈ കമ്പനിയിൽ മരുന്നുണ്ടാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ രോഗങ്ങളെ തന്നെ 3 തരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാധ്യം, അസാധ്യം, അസാധ്യം. ചികിത്സയിൽ മാറുന്നത്, മാറാത്തത്, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി മാറുന്നു. ചില മരുന്നുകൾക്കൊന്നും മരുന്നുകൾ തന്നെ കാണപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതങ്ങനെ ചികിത്സിച്ച് പോകാം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ വേഗത കുറക്കാമെന്ന് മാത്രം. മരുന്നുകളുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, മരുന്നുകളുണ്ട്, കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. Brahmi is used in many Ayurvedic medicines. 10 kilos of Brahmi will fetch Karan about 20 euros. That is a good income for an Indian farmer. Such herbs as the Asiatic pennywort are directly processed. In the fresh-pressed juice, the active agents are strongest. The heart of the artisanal operation is the oil kitchen. Together with clarified butter, the Brahmi juice is added to an oil already containing other herbs. The herbal mixture then simmers over a wood fire for 3 days. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ മറ്റ് പല ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലും ആയുർവേദം അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവരതിനെപ്പറ്റി വളരെ ഈഗറായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം ഇതിന് ഗുണകരമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല മരുന്നുകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. Most medicines are mixed from dried ingredients, including plants that would be toxic at the wrong dosage. With his scales, master mixer Abdullah must make no errors. ചുക്ക് ഉപയോഗിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട്. കടുക്ക, നെല്ലിക്ക, താന്നിക്ക ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഒരൈറ്റത്തിൽക്കും മരുന്നിൽക്കും ഏതാ കൂടുതൽ വരാത്ത അതാണ് ഉപയോഗിക്കുക. 100 പരം ചെടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വേര് ഉപയോഗിക്കും, തണ്ട് ഉപയോഗിക്കും, ഇലകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഓരോ മരുന്നിനനുസരിച്ചാണ് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക. Chavana Prasa consists of 36 ingredients. The medicine is said to preserve youth, raise desire, and fortify mind and vitality. Demand for Ayurvedic salves and pills continues to rise, raising demand for the herbs as well. In India, with a population approaching 1.5 billion, the rural population is highly reliant on comparatively cheap herbal medicine. But herb plantations are still scarce, and only few of the varieties are cultivated. Businessmen like Abdul Jabbar face increasing supply problems. ഹെർബ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പത്തേക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വിഷമമായി തുടങ്ങി. കാരണം ഫോറസ്റ്റ് ജനസാന്ദ്രത കൂടി, ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി. അങ്ങനെ അതുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞുണ്ട്. മറ്റേ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും തന്നെ കുറേ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. Abdul Jabbar's family not only produces medicine, the family business also includes an Ayurvedic clinic. Against spinal disc pain, an oil mixed with herbal extracts is rubbed in with the feet. The treatment is meant to not only relax the mind and musculature, but to mainly affect the flow of energy. The clinic is run by Abdul Jabbar's brother, Abdul Rahim. Shirodhara treatment involves pouring oil onto the patient's forehead for 20 minutes. 5,000 years old, Ayurveda is a holistic medicine that regards body, mind, and spirit together. നാഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിന്നെ ധമനികളുടെ രക്തക്കൊഴലുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റാണ്. ഇതിൽ ബ്ലഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അസുഖം തീരുമാനിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? തവള ചാടുന്ന പോലെ, പാമ്പ് പോകുന്നത് പോലെ, പക്ഷി പറക്കുന്നത് പോലെ, അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു അധികം മരുന്നുകൾ, ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ചേരുന്ന ഒരു ഫോർമുലേഷനാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിരവധി രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ്, അതേപോലെ പിന്നെ തലയിൽ വരുന്ന ആഘാതങ്ങൾ, പക്ഷാഘാതം, അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ടെൻഷൻ, ഇങ്ങനെ നിരവധി രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഹെർബ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പ്രൊസീജിയർ ഇതേമാതിരി തന്നെ ഇരിക്കും. ബ്ലഡ് ഒന്ന് നോക്കുക. Nadia Mansour takes care of the clinic's female patients. The doctor first detects the doshas, the elements that each person is born with. Air governs movement. Fire and water govern biochemical processes. And the element earth stands for firmness in the body. ഈ രോഗത്തിൽ ഏത് ദോഷമാണ് കോപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പൾസ് നോക്കി പറയാൻ പറ്റും. ഒരു രോഗത്തിൽ തന്നെ പല രോഗികൾക്കും വേറെ വേറെ മരുന്നാവും കൊടുക്കേണ്ടി വരിക. കാരണം എല്ലാ രോഗികളിലും ദോഷങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ദോഷങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. ദോഷം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം മനസ്സിലാക്കാനും മാറ്റാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. And the patient gets the formulation directly at the clinic's own pharmacy. Some of the ingredients for Ayurvedic medicines grow only in the mountains of northern India. In the state of Himachal Pradesh, deep within the Himalayas, lies the village Batad.
what the few villagers don't grow themselves, they find at a small village shop. It is run by Jindu Ram. Even with health problems, the villagers turn to the merchant for help. Jindu Ram is a substitute for a village doctor. A neighbor has come with stomach pain. Until 20 years ago, this village had a healer. When he died, they couldn't find a successor. So the shop owner decided to get training from an herbal healer in the next valley. डिस्पेंसरियाँ दूर है, चलो जड़ी बूटी से इलाज करते थे। पहले भी जड़ी बूटी से इलाज होता था, तो अब वैद्य है नहीं। अब कोई वैद्य रहे, कहीं रहे, वो भी अब कोई करते इस काम को, कोई करते ही नहीं। To treat stomach problems, Jindu Ram concocts a medicine of 5 herbs. He uses only tiny amounts. जड़ी बूटियाँ तो सारी खत्म ही है, वो अब मिलनी मुश्किल है। अगर कोई खेती बाड़ी करेंगे तो मिलेंगे, जंगल में तो जड़ी बूटी खत्म है। और बड़ी मुश्किल से तलाश करनी होती है जंगलों में। और ये जो है जटामासी है, ये भी तो जोतों में खत्म ही समझ लो। लोगों ने उठा के खत्म कर दिया, पैदा हो ही नहीं है। Valerian has a stimulating or calming effect depending on the dosage. In India, it's a panacea, one that is becoming difficult to find in nature. The neighbor is to take the mixture twice a day for 4 days. Without the herbal medicine, these villagers could no longer afford to get treatment. Jindu Ram regularly hikes up into the mountains. In the forests and on the alpine meadows, gathering herbs is strictly regulated or totally forbidden. Not everyone respects this. There's a thriving black market for wild herbs. After 2 hours, Jindu Ram reaches his goal. At 3,500 meters, the Forestry Authority has planted a small herb garden, a rare feature in the mountains of the Indian Himalaya. Here he finds kutki, the Indian gentian. Formerly prescribed for leprosy, today its extremely bitter roots primarily help asthma sufferers. In the herb garden, we also find Brahmi, named after Brahma, the Hindu god of creation. Jindu Ram knows 3 varieties of Himalayan Brahmi. ये ब्राह्मी जो है काटे हुए के काम में आती है। जहाँ से कट लगता है, मांस में लगता है, हड्डी टूटती है, ये उस काम के लिए है। इसको सुखाना, सूखा करना इसको, फिर सुखा कर जो 2 जड़ी बूटी और पड़नी। मीन की ब्राह्मी जो है वो आती क्या नाम पेट कब्ज़ के काम में, जिसको पेट कब्ज़ हो गया वो उसके काम में आएगी। तो जो असली ब्राह्मी जो है वो सेहत बढ़ाने के लिए, उससे सेहत बढ़ती है, उसको जो है दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं और उस ब्राह्मी से जो है आदमी की सेहत बनती है। A growing number of medicinal herbs have become hard to find in nature, like Bankakri, the Himalayan mayapple, which is said to fight tumors but is also highly toxic when incorrectly dosed. ये तो 4-5 साल के अंदर भी खत्म हो सकती है और दोबारा बीज पड़ना नहीं, वो कच्ची उखाड़ रहे फिर तो ख़त्म होने जा रही। और जड़ी बूटियाँ जो है ऐसी नर्सरी में ही मिलेगी, बाकी जगह नहीं मिलेगी। वो पब्लिक का हो गया, अपना ही नुकसान हो गया। तो बाहर जो है इतनी सारी जड़ियों के पता नहीं कितनी दवाइयाँ बनाएंगे वो, हमारे लिए तो कुछ काम की नहीं है। हमारे जो नहीं जानता तो उनके लिए क्या है, ये तो ऐसे ही घास लगा है। अब जो जानते हैं उसी को है पता कि भाई ये किस काम के लिए होती है। Tamil Nadu in the south of India.
the land of rice paddies, sugar palms, and Dravidian temples. Since ancient times, people in India have been extracting aromas and essences from herbs. In the temples, they burn incense in honor of the gods and sacrifice holy basil to them. The secret of this herb was discovered 4,000 years ago, during the Harappan civilization. A member of the legume family, this bushy plant thrives in the hot and humid climate of southern India. Though related to beans and lentils, its seeds are inedible. It is valuable because of the dye extracted from its leaves. The ancient Greeks called it indicon, coming from India. From this, the English derived the word indigo. This artisan operation was founded under British rule. Today, Balamanikkam's family processes 3,000 tons of indigo per year. இந்த இண்டிகோ மூலமாக நம்ம துணிக்கு மட்டும்தான் சாயம் போட்டுட்ருக்குறோம் இவ்வளோ நாள். ஆனால் நிறைய பேர் வெளிநாட்டிலேருந்து காஸ்மெட்டிக்காகவும் மற்ற பர்பஸ்க்காகவும் ஸோ இதுக்கான டிமாண்ட் வெளிநாட்டில் இனிமேட்டு அதிகமாக இருக்கும். The growing demand for natural products also sparked the revival of indigo. It takes only 10 grams of indigo to dye 1 kilo of cloth. When the cloth emerges from the indigo solution, it's yellow. The air then oxidizes the indigo, and within seconds it changes color to green, then blue. Indigo plants contain indican, a colorless chemical compound. First, the herb is soaked for 18 hours. Fermentation converts the indican into the yellow substance indoxyl. The water is then run into another tank. The workers toil away. For a full hour, they must churn the solution, aerating it. For this contact with air is what oxidizes the yellow indoxyl into blue dye. The water is non-toxic and can be discharged into the fields. The indigo has settled to the basin floor and can be gathered for further processing. The workers must first heat the dye, then filter and press it. இதுக்கு 2 டன் அளவு அவுரி செடியை போட்டோம்னா தான் 5 கிலோ இல்லை 10 கிலோ இண்டிகோ நமக்கு கிடைக்கும். இண்டிகோ தங்கத்துக்கும் ஈடாக இண்டிகோ அந்த காலத்தில் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. எதனாலனா லேபில் சிந்தட்டிக் இண்டிகோன்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க. அதை கண்டுபிடிச்சதுலேருந்து நேச்சுரல் இண்டிகோவுக்கு மார்க்கெட்டே போயிடுச்சு. இதை நாங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் நாங்கள் விடாமல் இதை நாங்கள் காலங்காலமாக நாங்கள் பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டு இருந்தோம். It takes the indigo cakes 6 weeks to dry. Then they can be sold. Indian cuisine is above all a spice cuisine. Only few fresh herbs are used, with the exception of coriander. And in the south of India, the markets naturally offer the leaves of the curry tree. Freshly fried in oil, they are an essential ingredient of southern Indian cuisine. Another plant on the southwest coast is vetiver. The plant belongs to the family of sweet grasses. Its versatility is almost unsurpassed. In India, vetiver is not only used in medicines and cosmetics, it also flavors foods. And by stabilizing the soil, it even protects against erosion.
To determine the ideal time for harvest, farmer Dasan tests the roots. Only they are processed, while the grass itself is fed to the cattle. Formerly, vetiver roots were primarily made into curtains. Their aroma keeps away mosquitoes. Indira Satyan and her friend Divya weave the roots into mats. നമുക്ക് കുടിക്കാനും നല്ല തണവോട് കൂടിയുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് രാമച്ചം. രാമച്ചത്ത് കൊണ്ടുള്ള സോപ്പ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പിന്നെ രാമച്ചത്തിൻ്റെ വിശറി, രാമച്ചത്തിൻ്റെ ചെരുപ്പ്, ചെരുപ്പ് വാദസംബന്ധം ആയുള്ള അവർക്കൊക്കെ എടുത്ത് നടക്കാനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. With her mats, Indira serves a niche market. Today, most Indian vetiver is used for the production of essential oils. A holy day in Mysore. In southern India's city of aromas and fragrances, marigolds and jasmine flowers are being strung into garlands. They are being prepared for the elephant-headed god Ganesh. His annual festival is celebrated throughout southern India. In Mysore, they light a 2-meter-tall incense stick in his honor. Arjun Ranga has 300 employees, but their boss composes the fragrances himself. To make incense, especially our specialized incense, we use a whole host of Indian herbs like jatamasi and tulsi and turmeric. And of course, we have our traditional vetiver and all of that as well, which we use the extracts of in our incense making. Founded in 1950, the company Cycle leads the Indian market for stick incense. Arjun Ranga runs the family business in the 3rd generation. In Mysore and the surrounding area, they produce 8 billion incense sticks per year, nearly 22 million per day. Our first successful brand was called Cycle Sugandha Mallika. This was in 1952, and we've just done a relaunch of the fragrance with more modern materials as well added to it. But the core of the fragrance still remains the way my grandfather created it. And it's 1952, so it's almost 70 years, 60 years old, the fragrance. Yeah. The bamboo comes from the northeast of India. The sticks are rolled in 25,000 households and by many contractors. Today, Arjun exports them all around the world. Post the year 2000, there's been a sudden increase in incense consumption worldwide. You know, with the advent of Ayurveda and spirituality and yoga and all of that, incense sticks, especially Indian agarbattis, as they're called in India, have become an instant connect with Eastern culture. So you actually light an incense stick and the Eastern ambience is created. Arjun's sticks burn on house altars and in temples all across Asia. Some Indians also attribute healing powers to incense aromas. The foothills of the Indian Himalaya. In the catchment area of the Beas River lies the town Banjar. At around 9, the merchants open their shops. Among them, Buddhi Singh. Buddhi Singh runs a small shoe shop.
In the summer, it's run by his wife, while Buddy Singh attends to a business that is more profitable than selling shoes. अभी तक माल जो है मार्केट में पूरे तरीके से नहीं आया है। 2-4 हफ्ते में जो गोदाम भर जाएगा, उसके बाद में माल को जहां मार्केट अच्छी होगी, दिल्ली या अमृतसर ले जाऊंगा। तब जो है माल भी जो है उस टाइम गोदाम पूरा भर जाएगा माल से, तो 2-4 हफ्ते में जो है माल दिल्ली ले जाऊंगा या अमृतसर ले जाऊंगा, जहां भी मार्केट अच्छी हो। Buddy Singh has rented a car for the day. He's on the road in the mountainous landscape of Himachal Pradesh, one of the species richest regions in India. 3,500 different plants grow here. 800 are of medicinal use. Buddy Singh deals in wild herbs gathered at middle mountain elevations. Even in the most remote hamlets, the merchant has his middlemen. Sishram doesn't gather himself. He buys for Buddy Singh whatever the locals bring in from the surrounding forests. In villages like this, gathering wild herbs provides important extra income for the families. The Forestry Authority issues licenses. An annual 2.5 thousand tons of medicinal plants are gathered and traded in this part of Himachal Pradesh alone, worth nearly 2 million euros. The price depends on the quality. Buddy Singh checks the herbs, then the two discuss them. Dried, many plants look similar, and not all heal. Some can be poisonous. It's vital that the merchant knows the plants. जड़ी बूटियाँ तो वैसे बहुत किस्म की है। यहाँ जो है पूरे हिमाचल में 165 किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं, परंतु इस एरिया के अंदर 9-10 किस्म की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। उनको हम इकट्ठे करते हैं। और कुछ एक जड़ी बूटियाँ जो है, जैसे डायबिटीज़ है आपकी, तो चर्म रोग के लिए आती है। पथरी का इलाज, जो पेट में पथरी बन जाती है, उसके इलाज के लिए आती है। एक जड़ी बूटी ऐसी है जिसके गैस बन जाती है। गैस जो है पेट की गैस, डायबिटीज़, और आपका जो है एक जड़ी तो इसके लिए कैंसर तक का इलाज करती है। The most effective and most valuable medicinal plants cannot be had from merchants like Buddy Singh. They are largely gathered illegally and sold under the counter. इसकी हाइट जो है 12,000 से 10 और 11,000 हाइट में जो है, जो महंगी जड़ी बूटियाँ वो 10 और 11,000 हाइट में होगी। जो इस हाइट में जो होगी उसके जो है दवाइयाँ जो है सही तरीके से नहीं बनी, क्योंकि उसका जो अर्क जो निकलना वो जो है सही तरीके से नहीं आता है। उसके जो है गुणवत्ता जो है उतनी नहीं जितनी कि 10-11,000 हाइट की जड़ी बूटियाँ होती हैं। In India, 130 medicinal herbs are used commercially on a huge scale. More than half of these plants are endangered. Barely 20 species are actually cultivated. In the mountains, Buddy Singh has a small farm, tended by his sons. This merchant knows that wild herbs won't be able to meet Indian demand for herbal medicine forever. The future lies in their cultivation. Snake root, for example, thrives at this elevation. Also called serpentine wood, it stimulates the appetite and lowers blood sugar. The family garden now also features Indian valerian. Due to overharvesting in the wild, it is now an endangered species and, accordingly, expensive. यदि नई मार्केट है तो घास, पशुओं के लिए घास हो जाता है।
तो मार्केट हो गई तो इसको निकाल दिया। फिर हम जो है बीच में इसको लगाते हैं, ऐसे मेंढों में लगाते हैं। मेंढों में लगा करके हमारा जो है दोनों फ़ायदे, घास के लिए घास भी मिल जाता है और हमारा जो है बीच वाली ज़मीन ख़राब नहीं होती, इसलिए इसकी मार्केट वैल्यू हमें अच्छी मिल जाती है। 3 साल के बाद 4 साल के बाद निकाला तो इसकी जो जड़ देखो कितनी मोटी हो जाती है। ये देखो कितनी मोटी होगी जड़, इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इससे अच्छे गुणवत्ता वाली जो है दवाई बनेगी। Whether gathered wild or cultivated, herbs are dried in countless households in the Indian mountains. Through such merchants as Buddhi Singh, they find their way to the major markets. Founded during Mughal rule in the 17th century, at the heart of Delhi's old town Kari Bayuli lies Asia's biggest market for dried fruits, spices and herbs. The walk to his office takes Akhil Galodia through Tambaku Qatar, Tobacco Alley. This leads to an inner courtyard. This is the heart of the Indian trade in medicinal herbs. For 130 years, the Galodia family has been in the herb business. He does his business by telephone. Akhil is a wholesale merchant. His inventory includes more than 500 herbs, with total annual sales exceeding 300 tons of dried plants only. His customers are located throughout India, manufacturers of medicines and cosmetics who rely on Akhil to deliver premium quality. मुश्किल होता जाएगा ही ना, क्योंकि जो आदमी को पहचान ही नहीं है। जो पुराने आदमी होते थे जिनको पहचान होती थी, अब वो रहे नहीं है। नई जनरेशन जो है वो जाती नहीं है जंगलों के अंदर इकट्ठा करने कलेक्शन के लिए उस आइटम्स, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। सप्लाई डिमांड उतनी ही है जितनी चाहिए पहले से, बल्कि इंक्रीज ही हो रही है डे बाई डे। तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है, शुरू हो ही गया है जो। It is a world all its own. There are no walk-in customers, so those entering the courtyard are generally in the herb business. Or they serve the business like the chaiwala, who makes the merchant's tea. ये कुटकी है, इसका रेट है आज के दिन जो है 1000 रुपीज़ पर केजी, और ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के काम आता है। Indian medicinal plant sales are estimated at an annual 1.5 billion euros. Akhil's customers primarily trade in the all-round herbs. ये जटामासी है, ये जो है हेयर फॉल के अंदर काम आती है। इसको जो है एक ऑयल के अंदर इसको बॉईल करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाएगा पहले इसका। उसके एक्सट्रैक्ट को जो है किसी भी ऑयल के अंदर आप मिक्स करके जो है सर पे लगाने से उसके जो है हेयर्स जो है सही हो जाते हैं। हेयर फॉल के अंदर काम आता है, इसलिए ज़्यादा ये जो है डिमांड में रहता है। The annual growth rate of the Indian market for medicinal herbs is currently 20% and increasing. डे बाय डे जो है आयुर्वेदिक का जो है इंक्रीज़ हो रहा है, मगर उसके साथ क्या क्या है, जो आज से 10 साल पहले आता था मटेरियल वगैरह, उसके अंदर क्वालिटी के अंदर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। पहले बेस्ट क्वालिटीज आती थी एट चीपर रेट, अब रेट ज़्यादा है, क्वालिटी डाउन होता जा रहा है। कुछ हर्ब्स जो है वो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ही स्पाइसेस ख़त्म ही हो चुके हैं। Elsewhere, they have begun large-scale cultivation of a few select medicinal herbs. Tulsi, holy basil, also called the incomparable, helps against many ailments. It is said to be effective against viruses and inflammation, as well as increasing longevity. The harvest is already sold. It goes to Bangalore, the capital of Karnataka state, to the world's biggest factory for Ayurvedic medicines. The producer's warehouse receives daily deliveries of basic ingredients for its medicines,
the plant extracts of 166 different herbs. So now, how is it progressing so far? Biochemist Shyam Ramakrishnan is the head of the research department. Correct. Under his supervision, 200 scientists analyze the active agents of plants, testing them for the development of new products. So what is the status of your response? They're trying to grow the rarer plants in vitro. Woodfordia fruticosa, the flamethrower bush, for example, finds a use in many Ayurvedic medicines. An extract of its flowers is said to help against herpes. Our attempt has always been to contemporize Ayurveda. We do the clinical trials, we perform in vitro biology experiments, we look at molecular biology. So what we are doing is applying the modern technologies, marrying it with the Ayurvedic herbs, marrying it with the Ayurvedic science. $10 million pills per day translates to an annual revenue of 300 million euros. In more than 90 countries, doctors prescribe Ayurvedic medicines bearing the Himalaya brand. The key market, of course, is India. For this market, a few years ago, the company added the production of cosmetics. As the nose of the company, Indira Kumarasen develops new fragrances. Her current project is a liquid hand wash with a basil note. हमारे मार्केट टारगेट है ग्रोइंग इंडियन अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास फिर हमारा एक और कस्टमर है द वर्किंग वुमेन उनको अभी टाइम नहीं मिल रहा है अपने अपने के ऊपर ख्याल कर रखने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है उन लोगों को The products contains some of the natural ingredients like neem, tulsi and aloe vera. Now the growing trend is also towards the good quality of the natural ingredients. That's what consumer like. That's a growing trend of Indian market. That's right. Yeah. Himalaya's philosophy has been wellness in every home through herbal healthcare, right? Through herbals. And that is where our forte is. We research into herbals left, right and center. We look at herbals as the centerfold for everything. Herbs are also the basis of Tibetan medical treatment. Since the Chinese annexed Tibet, this country's more than 1,000-year-old medical knowledge is being transmitted primarily in India. In the Dauladhar Mountains lies McLeod Ganj, the seat of the government of Tibet in exile. After fleeing from the Chinese, the Dalai Lama settled in McLeod Ganj, and with him 11,000 people, most of them Tibetans in exile. Like no other place in the world, McLeod Ganj is a refuge for Tibetan culture. For this reason, primarily young Tibetans are drawn to the residence of the Dalai Lama. Tenzin Somo and her friends have come to McLeod Ganj from afar to study Tibetan medicine. They will be staying for 6 years. Tenzin Somo is 23 years old and in her 4th year of studies. 125 young women and men are studying at the Minsei Kang Institute of Tibetan Medicine.
Founded in the 8th century, it combines elements of Indian Ayurvedic, Chinese, and Persian medicine. One of the key subjects is herbalism. Exams are approaching. Attached to Minsei Kang is a clinic. The institute also produces its own medicines. At the end of their studies, up-and-coming doctors like Tenzin Somo must know 175 Tibetan medicines, some with up to 32 ingredients. They must know how these are made and from which substances. Although a small number of medicines also contain minerals, Tibetan healing is based, like Ayurveda, on herbs. Their training regularly takes the students high into the mountains. 1,500 meters must be climbed. At the tree line, we find the greatest diversity of medicinal herbs. The students learn at what time of year the active agents of each individual plant reach their peak. Generally speaking, roots are usually harvested in autumn, leaves and flowers in summer. By the end of their studies, the students must be able to identify more than 200 medicinal herbs in nature and know their effects. ma soil pentore ajuki menal de te changmulo ani chacham phechi dangri ani loma phechi dangri medo phechi dangri tongbo phechi dangri When they pluck herbs, the students recite the mantra of the medicine Buddha, requesting him to permanently heal the afflicted of this world. The students were given 4 hours to look at the herbs in their natural environment. This is followed by an on-the-spot examination. Tenzin will soon be working as a doctor. The rural population especially needs affordable, compatible medicine, a medicine based on herbs. These students will only be able to treat future patients if India can manage to preserve its great variety of herbs in nature.